Flutter tutorial for beginners. Let's say you want to learn Python. This is a certification by Google themselves. Hello everyone, I am Ashish Konana and today I'll be talking about the best free coding courses that you can take a look at if you are new to programming or if you want to learn anything like Python, web development, or if you want to learn machine learning, you want to learn Android development, whatever it is that you want to learn. I'll be sharing with you some really great resources that you can take a look at to learn about all of these things. Now, the courses I will be talking about are going to be quick. These are not going to bore you. And number two, these courses would be about learning by doing them. So that's really important कि तुम बोर नहीं होने चाहिए. So let's take a look at these courses. I'll be going one by one and make sure you hit the like button and the subscribe button. That would be really important because the goal of this channel is to reach 500 subscribers before the end of this particular month. So consider subscribing if you like it. The first course that you should be taking if you are getting into programming has to be CS50 2020. So these are the 2020 lectures to the 2020 course. So as you can see in this particular course, you would be learning about C, arrays, algorithm, memory, data structure, Python, SQL, HTML, CSS, JavaScript, security के बारे में सीखोगे, उसके बाद तुम Flask के बारे में सीखोगे, AI के बारे में सीखोगे, उसके बाद कुछ ethics होते हैं. So basically this course would teach you little bits of all the various fields in software development and then you can choose which field is more interesting to you and then you can go deep into that field. So this is what you can do. Go through this complete course. It's going to be really interesting. मतलब काफी छोटा सा ही कोर्स है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना तुम्हें इसका कोर्स कंप्लीट करते हुए. The professor that is teaching this particular course is really enthusiastic. So हाँ, काफी मजा आएगा तुम्हें इस particular course को करते हुए. After you have done with this, let's say you want to learn Python, but then you can take a look at this course called Python for Everybody Specialization by University of Michigan. It's a great course to teach you the basics of fundamental concepts of Python. It's actually a specialization that you can take up for free. So take a look at this course. Like काफ़ी सही कोर्स है ये भी. तुम्हें मतलब इसके अंदर तुम एक सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो अगर तुम्हारे पास अपना यूनिवर्सिटी का आईडी है तो या दैट्स अ थिंग. देखो तुम्हें इसके अंदर प्रोग्रामिंग फॉर एवरीबॉडी सीखोगे, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग पाइथन टू एक्सेस वेब, उसके बाद डाटाबेस के बारे में सीखोगे यूजिंग डाटाबेस विद पाइथन. सो हाँ जी भैया, काफ़ी कुछ सीखोगे तुम इस पर्टिकुलर लाइक कोर्स में एंड इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग. सो आफ्टर टेकिंग अ लुक एट दिस पर्टिकुलर कोर्स अब तुम्हारा मन करेगा कि लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स बना लेते थे ताकि मेरी नॉलेज भी ब्रश अप हो जाए और लाइक सीवी के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स भी बन जाए. सो अ ग्रेट प्लेस टू डू दैट वुड बी दिस यूट्यूब चैनल टेक विद टिम. सो ही हैज मेड सम रियली गुड इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड ट्यूटोरियल्स फॉर पाइथन फॉर फ्री ऑल ऑफ यू on Python. So this complete channel is about Python and he has done a phenomenal job explaining all the bits. So just go to the playlist, like playlist पे click करो और तुम्हें हर एक चीज़ के ऊपर tutorials मिलेंगे. So this is how you can learn about machine learning, about different modules in Python, and yeah. So now you have learned about Python and you want to learn about machine learning, then this is the course for you. This course is machine learning by Andrew NG. Like this will basically teach you about how to get started with machine learning and this is the most popular course that people take in ML. It's a really interesting course. मतलब काफ़ी सही कोर्स है. तुम मतलब बेसिक थ्योरी के बारे में काफ़ी अच्छे से जान जाओगे. मैंने भी ये कोर्स कर रखा है, मतलब ठीक है. तो इट्स रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड. काफ़ी सही कोर्स है. वंस यू आर डन विद दिस पर्टिकुलर कोर्स तब तुम क्या कर सकते हो, you can go into computer vision. This is the course Stanford University CS231N. Like this is a great course. The way this course is structured will help you understand all the concept of how to use images, how to use data and how to evaluate and make models out of it. Also then you can take a look at this deep learning specialization on Coursera that you can get for free without getting the certificate. Like Coursera की ये बात है कि तुम मतलब मेजर कोर्सेज ले सकते हो बट तुम्हें सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी. सर्टिफिकेशन लेनी है तो तुम्हें कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड लाइक तुम्हें अगर पे कर सकते हो देन यू कैन डेफिनेटली गेट द सर्टिफिकेट, वरना नहीं. So in this particular course you would be learning about neural networks and deep learning, improving deep neural networks, so structuring machine learning projects, conventional neural networks और मतलब तुम काफ़ी सही बेसिक्स के बारे में सीख जाओगे
and then you can keep going after learning about these basic concepts. Let's say you want to learn about web development. What is the one great course that you can take? So the course that you can learn is this one by Free Code Camp. Like Free Code Camp के बारे में मैंने last video में भी discuss कर रहा था. It is a great place for you to get the certification. Like they are offering a certification for free अगर तुम complete कर लेते हो. So start off with the responsive web design page, मतलब ये तुम इसके अंदर कर लोगे. इसके बाद like अगर तुम्हें say hello to HTML करना है, then they have given you like this programming window, और उसके बाद जो इसका result होगा वो भी तुम्हारे साथ आ सकता है. So तुम बोर नहीं होगे, तुम्हें HTML CSS मतलब और जावास्क्रिप्ट तीनों समझ आ जाएंगी और तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ के साथ. सो इट्स अ ग्रेट कोर्स. और तुम फ्री कोड कैम्प का यूट्यूब चैनल भी चेकआउट कर सकते हो. लाइक काफ़ी अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं उस पर भी. सो नेक्स्ट, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट एंड्रॉइड डेवलपमेंट, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो बाय राहुल पांडे, बिल्ट एंड पब्लिश एन एंड्रॉइड ऐप फुल कोर्स विद कॉटलिन. लाइक काफ़ी बढ़िया तरीके से भैया ने करवा रखा है. सो हाँ जी भैया, यू कैन टेक अ लुक एट दिस कोर्स. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो यू वुड लर्न अबाउट कि मतलब ऐप कैसे बनाते हैं और उसको पब्लिश कैसे कर सकते हैं. सो कॉटलिन सिखाई गई है इसके अंदर. सो या दिस इज अ ग्रेट कोर्स. बट इसके बाद जो आने वाला है वो इससे भी तगड़ी चीज़ है. हाँ जी भैया, ये देखो, एंड्रॉइड बेसिक्स इन कॉटलिन. So this is a certification by Google themselves. So if you click here, then you can take a look at the Android development certification. Like देखो, Kotlin basics available है, layouts के बारे में available है, navigation है, connect to the internet है, data persistence है. So if अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ Kotlin basics के आगे explore के अंदर, मैंने क्लिक करा था introduction to Kotlin पे. देखो introduction to Kotlin, create your first app, build a basic layout, add a button to the app. Like काफ़ी सही चीज़ है, मतलब काफ़ी पॉपुलर है. और ये करने के बाद तुम्हें ऑब्वियसली तुम्हारी सर्टिफिकेशन तो मिलेगी. सो इट्स ग्रेट. लाइक और एक खास बात इसके अंदर, लाइक कुछ क्विजेस भी हैं बीच में. सो दे कुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू. देन यू हैव फ्लटर. लाइक अगर किसी को फ्लटर पढ़नी हो, देन दे कैन यूज दिस प्लेलिस्ट फ्लटर ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स बाय द नेट निंजा. लाइक काफ़ी सही प्लेलिस्ट है, मेरे को किसी ने रिकमेंड करी थी. तो हाँ जी भैया, यू कैन ऑब्वियसली टेक अ लुक एट दिस. सिमिलरली नेट निंजा की तरफ से एक रिएक्ट के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है. लाइक इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड वांट टू स्टार्ट रिएक्ट, टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट. और हमेशा की तरह ऑल द लिंक्स वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन, या पहला पिन कमेंट चेक कर लेना. अब बात करते हैं कि लाइक तुम्हें अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखनी है, सो देयर इज दिस कोर्स by Stanford CS 193P Spring 2021. If you have iOS, then you can definitely do this Swift development. Like तुम्हारे पास एप्पल का मतलब लैपटॉप होना चाहिए. मुझे ये बात समझ नहीं आती, बट हाँ, अगर तुम्हारे पास एप्पल का लैपटॉप होगा और एप्पल के फ़ोन्स होंगे तभी तुम उसके मतलब ऐप्स टेस्ट भी कर पाओगे. सो दैट्स द थिंग. तो तुम स्विफ्ट सीख सकते हो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से. लाइक काफ़ी सारी कोर्स बना रखा है स्टैनफोर्ड वालों में. अब इसके बाद आता है MIT OCW कंप्यूटर साइंस. लाइक MIT ने काफ़ी तगड़े कोर्सेज अवेलेबल कर रखे हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम फॉर 2011 का, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग इन पाइथन फॉर 2016 का, इंट्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड डिमांड, लाइक इंट्रोडक्शन, लाइक काफ़ी मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं. एंड या आई एम लर्निंग, लाइक मैं ये कोर्स कर रहा हूँ MIT इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन. सो हाँ जी भैया, जो इसका ट्रेनर हैं, लाइक जो इनके प्रोफेसर हैं, वो काफ़ी तगड़े हैं. सो इट्स ग्रेट. अब बात करते हैं एडेक्स के बारे में. सो एडेक्स ने पार्टनरशिप कर रखी है काफ़ी सारे कॉलेजेस के साथ, काफ़ी सारे स्कूल्स के साथ. लाइक देयर इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, देयर इज MIT. तो तुम्हें काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे. एंड तुम मेजरली ये कोर्सेज फ्री होते हैं, तो यू कैन टेक अ लुक एट देम. तुम्हें मतलब अपनी सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, बट कोर्सेज तुम्हें फ्री में मिल सकते हैं. So yeah, do take a look at them. So that was pretty much it. That was a quick video about all the various places where you can learn to code for free. That's the one I learned the most from. Like सबसे ज़्यादा मैंने इन्हीं सब जगहों से सीखा है, और बाकी जो मेरे पास नॉलेज थी वो मुझे तुम्हारे साथ स्प्रेड करनी थी. So yeah, तुम भी चाहो तो तुम आगे इसको किसी के साथ भी स्प्रेड कर सकते हो बाय शेयरिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, या फिर वैसे भी बता के. एंड या ऑलराइट, दैट इज प्रीटी मच इट. I hope you get to learn something from it. If you did, then consider subscribing to the channel, and that would be really appreciated. And you can also follow me on Instagram. The handle will be somewhere around here. And yeah, that's all. Bye bye.